Right. So good afternoon, everyone. Good afternoon. I hope all of you understood these problems, right, and have attempted these. Yes or no? Tell me. How many of you attempted these problems? Raise your hand. Were you able to solve these problems? Tell me, were you able to solve these problems? Because these were just practice problems for your self practice. है ना? Formula putting getting पे था easy level वाला, right? है ना? Just देखो, first question. A wire of diameter 1 mm, diameter is given, right? Okay, 1 mm, and length is given, is fixed at one end and stretched by this. This is delta L, है ना? Load of this is mass. Calculate y. Formula putting getting है कि नहीं? Tell me, right? Exactly. All of them are just formula based, है ना? Formula based तुम्हारे solve करने के लिए, right? ताकि एटलीस्ट फॉर्मूला बेस समझ में आए. जिसे यहाँ पे देखो, breaking stress means maximum stress, yes or no, right? So this is what, ये force का unit हो गया, ये area का unit हो गया. This is stress. Force per unit area is given, yes or no, right? Find the greatest length of aluminum wire that can hang vertically without breaking, right? है कि नहीं? Find the greatest length of aluminum wire that can hang without breaking vertically. Density is given. Now tell me, here, what do you have to do? What do you have to do? Tell me. Area F by A is there, right? F by A we already know, right? And density is given. Density is given. Can you find length? Tell me, can you find length? Yes or no? Correct. Very good. Yes, because F is what? Mg by area, and we know that density is equal to what? Tell me. Mass by volume, which is area into length, right? So mass per unit area is density into length, right? Yes or no? And this is given. Got it? Tell me, got this? Correct. So I hope all of you understood this, that sir, density into length is equal to mass by area. So mass by area is density into length. So density into length into G is equal to given 7.5. और याद है, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, रो जी एच. याद है? रो जी एच याद आ रहा है कि नहीं? सेम mg को कन्वर्ट किया था जो डेंसिटी के टर्म में, है कि नहीं? तो सेम चीज है, सेम चीज. सो सेकंड वाला भी इजी था, है कि नहीं? सो ये सब फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है. बताओ, ऐसे सवाल आएंगे तो बनेंगे नहीं बनेंगे? ऐसे सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे? बनने चाहिए ना, बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए. बेसिक फॉर्मूला याद है तो, और ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है इसमें. नो. Calculate the percentage increase in length of the wire. So delta L by L into 100 पूछ लिया. Yes or no? Right? Diameter दे दिया है, फोर्स दे दिया है, y दे दिया है. निकल जाएगा. फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, yes or no? है कि नहीं? Right? Okay. Now fourth और fifth भी हो जाएगा. Yes or no? Fourth और fifth भी हो जाएगा. Clear? Exactly. So I hope कि this is something that you have already solved. Then next is bulk modulus वाला, है ना? तो यहाँ पे मैंने कुछ बताया था, एरर था, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था. Okay. Now these three questions are also similar, formula based. Yes or no? Tell me. These three questions are also formula based, right? If we remember the formula, we can solve it easily, है ना? चलो. Okay. Very good. Very good. First में doubt है. Okay, चलो. We will see. A sphere contracts in volume by this percent. This percent, ये तो हम लोगों ने किया था ना. If it is in percent, so what is delta V? Delta V is 0.01 by 100. Yes or no? Which is 10 to the minus 4. This is delta V by V. Yes or no? Delta V by V is given. Got it? Because it is contracts by this volume, है ना? Now, this is what? And taken down to the bottom, see at 1 kilometer deep. So height is given as 1 kilometer. Find the bulk modulus of material. Density of seawater may be taken as this, right? So you have to find what? Bulk modulus. Enough. What is the formula of bulk modulus, guys? Tell me.
मैं वही बता रहा हूँ ना कि क्या एरिया चाहिए, क्यों फॉर्मूला भूल गए क्या? प्रेशर बाय डेल्टा वी बाई वी, यस और नो? बल्क मॉडुलस है ना, एरिया क्यों चाहिए? राइट, प्रेशर है ना, यस और नो? व्हाट दिस? अब बताओ, प्रेशर प्रेशर निकालना है, प्रेशर, तो प्रेशर फॉर्मूला में ऑलरेडी, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच हमने देखा है, यस और नो? आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर क्लास 9 थी कॉन्सेप्ट से, रो जी एच, यस और नो? प्रेशर वाज रो जी एच, यस और नो? अभी मैंने बताया ना, प्रेशर इज, है कि नहीं? सॉरी, रो जी एच, सॉरी रो जी वी, फोर्स वाज रो जी एच, रो जी वी, रो जी वी, रो जी एच इंटू एरिया, राइट, रो जी वी, है ना? राइट, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, है ना, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज डेल्टा वी इज गिवन, है ना? सो डेल्टा वी बाई वी यहां से आ जाएगा, ठीक है? ओके, सेकंड थर्ड भी हो गया। ओके, नाउ shear modulus and modulus of rigidity, ये समझ में आया था ना? दिस इज सिमिलर टू व्हाट? टेल मी, दिस इज सिमिलर टू, बताओ, longitudinal stress. The only difference in this case would be what? Direction of force, right? है ना? For example, if the force, right, the destroying force is in this direction, so every point, right, and this is fixed point, right, it will not move, no, but every point will try to move, right, yes or no, by the action of this force. याद है कि नहीं? ऐसे हो गया ये, और ये ऐसे हो गया, right? So this is your delta x and this is your L. Okay, and this is your delta theta, है कि नहीं? So in this case also stress is equal to elastic constant to strain, that is same, right? That is not going to change, yes or no? सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बताया सबको ये समझ में आ रहा है? I'm just revising, है ना? Right? खींचेंगे, है ना, तो ऊपर वाला ज्यादा मूव करेगा, नीचे वाला ज्यादा मूव करेगा, नीचे वाला ज्यादा मूव करेगा, यस और नो? है कि नहीं? राइट, सोचो, जेन्युइनली करेगा ना, है कि नहीं? ओके, सो नाउ when we talk about elastic constant in this case, in the case of shear strain or shear stress, that is called as modulus of rigidity, and it is represented by eta, which is basically your tangential stress or shear stress by shear strain. Okay, right? So it's just similar to bulk modulus, similar to Young's modulus, right? है ना? Clear है? Tell me now, if I ask you, think about it, if I ask you, right, how to find tangential stress, right, है ना, if I have to find tangential stress, it will be what? F by A only, but this F will be which force? Parallel force or perpendicular force? Tell me, this force or this force? It will be parallel force, right, है ना? Parallel to the surface, right, parallel to the surface, है ना? Right, I'm not asking the angle between surface and the, tell me, because when you talk about vector, the area vector, the direction of area vector in this direction, but I'm not asking about this, I'm just talking about the surface के parallel लग रहा है ना, right, by area of this surface only, area of cross section only, है ना, right? So इस पे सवाल आएगा तो बन जाएगा हमसे, बनेगा नहीं बनेगा? Tell me, yes or no? Can I solve this? Right, similar formula, similar problem, है ना? Now in the case of shear strain, we know that the shear strain can be delta theta also, or this theta also, or delta x by L also. So कभी कभी मुझे ये देता है, कभी कभी मुझे ये देता है, so depending on that I need to use these two formulas, है ना? Right, either it would be what? F by A
into theta directly, or this, right? Because delta x by L is nothing but delta theta. Okay? Okay? Right? And here the condition is that this theta should be very small, right? Because this theta is equal to tan theta, or tan theta is equal to theta only when theta is very, very small. Got it? Which is less than 5 degrees. Okay, कहीं कहीं पे 10 भी रहता है, but usually less than 5 degrees. Okay? Right? Okay, I'm just revising these things, and I'm just revising these things. So, अगर ऐसा सवाल रहे, ध्यान दो, अगर ऐसा सवाल रहे, है ना? A rubber of side 20 centimeter, right, has one side fixed while the tangential force equal to weight of 400 kg is applied to the opposite face. Find the shearing strain, right? Shearing strain. Shearing strain is what? Delta x by L, which is equal to what? Tell me. Which is equal to what? Mulch modulus into shearing strain is equal to stress now. Force per unit area, yes or no? This is the basic formula. है ना? Force is given. Tell me, write down the information, sir. Side is given, right? So area is given. Area is equal to what? 400 into 10 to the power minus 4 meter square. Because centimeter है ना? Okay. Now force is 4,000 Newton, because 400 kg into 10, 4,000 Newton, है ना? Right? So force is given, area is given, right? This eta is given, this eta is given. Can I find delta x by L? Delta x by L is equal to force per unit area into eta. Yes or no? Got it? Everyone got this? Formula putting getting hai ki nahi? Yes? Okay. Now once we get this, once we get delta x by L, can you calculate delta x? Delta x is what? Tell me, L का value क्या होगा? Because it is a square, right? Cube, है ना? So delta L will be this only ना? L will be the side of square only. So delta x निकल जाएगा ना? Okay? चलो. Okay, very good. So see the same concept, yes or no? Tell me, yes or no? Shear strain F by A निकल गया stress. Then strain निकल गया ना? Okay. Then strain energy we have discussed. I guess all of us remember derivation of strain energy we have done, है ना? Right? Okay. So it will be simple formula putting getting. Simple formula putting getting. Right? यहाँ देखो. Calculate the energy, increase the energy of brass of length. This length is given. Cross section area is given step by step. When compressed by a force of this Newton, force is also given, है ना? Along its length, right? Y is also given, right? अब बताओ यहाँ पे. Now tell me, change in length is not given. Do we require change in length? Tell me, do we require change in length here? If I can find stress and Y is given, can I calculate it? Tell me directly, can I calculate this directly? You can find change in length, by the way. You can find strain, है ना? But जरूरत ही नहीं ना, because we know that half into stress whole square by Y is equal to half into stress into strain, right? The multiple formulas, yes or no, है ना? So I can use any of them. Got it? It is also formula putting getting, yes or no? Yes or no? ओके चलो, तो बेसिक ये हो गया है ना? तो ये सब बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया. फॉर्मूला समझ में आया. सबसे पहली बात, फॉर्मूला लिख लिया हमने फॉर्मूला पूरा याद कर लिया, हमें फॉर्मूला यूज करना आ गया. ओके, यस और नो? टेल मी. आई गेस दिस इज क्लियर, है ना? ओके, राइट. So as I said, when this is just a term that we need to remember, Poisson's ratio. Okay, right? Now what is this Poisson's ratio? Now think about it. Now think about it. Whenever we have studied, right, longitudinal stress, longitudinal strain, we considered the area to be same. Yes or no? Tell me. We ignored the fact that volume is not going to change, right? So if there's a change in length, there's change in area also, right?
No, but we ignored that fact. Yes or no? We totally ignored the fact because since the length is not changing by a very, tell me, large, value, the change in area will be much smaller, even smaller, right? So we totally ignored it, but if you see this, right? So whenever the length is increased, the area will decrease, and whenever the area is length is decreased, area will increase. Yes or no? Yes or no? Right? Intuitively. Yes, so if I want to know, think about it. Whenever we talk about this, if I want to know that by what ratio, right, the thickness of rod is changing with the change in length of the rod, है got it, right? When it is compressed or expanded, right? Then that ratio is called your Poisson's ratio. समझ में आ रहा है सबको? Yes or no? Everyone, are you getting my point? Right? Logically समझ में आया? Yes or no? Right? So yes, नहीं समझ में आया? Okay, ठीक है. देखिए बता यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, what I'm trying to say is, suppose you compress a rod, right? You compress a rod or you elongate a rod, right? So whenever you elongate a rod, what we have considered? We have considered the length will increase. There's a change in length. Yes or no? Yes or no? Tell me. Right? Okay. So we have studied that there will be strain. There will be longitudinal strain. There will be longitudinal strain, which is change in length by original length. Yes or no? Tell me. Right? Okay. But at the same time, don't you think that the area will also decrease? Yes or no? Right? Because volume is going to be same, na? Volume is going to be same, right? Okay. है So usually we ignore that, right? Okay. Usually we ignore that, right? Now, if I say that there's a change in radius, Now think about it. Change in radius will be due to which? Tell me, right? It will be due to another strain. Yes or no? It is not your longitudinal strain, right? There will be change in radius due to other kind of strain. Yes or no? Yes or no? Right? Yes, clear? So that's what I'm saying, right? That's what I'm saying. Sir, we calculated your longitudinal strain, which is what? Delta L by L. That is, this is just a term, variable used here, right? And delta by L. Now, in same way, if I'm saying that this perpendicular direction as longitudinal, this as latitudinal, right? And okay. Right? This is called your latitudinal strain because it is the change in what? Change in radius or change in cross section area. So this is also what? Tell me. This is also what? Tell me. Change in radius by original radius. Yes or no? Got it? Right? Or it will be like instead of this, some people also take shear strain. Okay, shear strain is also considered. Got it? Right? In some cases, if this latitudinal strain is not given, then shear strain would be given. Okay, right? So I can say that it is a ratio of what? Tell me. Shear strain by longitudinal strain. Okay, got it? Yes or no? Okay, that's it. That's all you have to remember. That's it. Okay. Okay, got it? Any issues in that? बस Poisson's ratio क्या होता है, बस ये जानना है और कुछ नहीं जानना है. Okay, so as I said, we will revise first, है ना? So I hope all of you understood what is Poisson's ratio, है ना? बस हमको ये term याद रखना है, ratio याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है. ठीक है? Okay.
So let us have one simple Kahoot, बच्चे वाला Kahoot फिर रिवीजन के लिए, then we will solve more problems. अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, but basics हुआ है, basics. Like NCERT हिसाब से you can say कि NCERT हिसाब से होगा basics, right? I'm just trying to teach basic for now, ठीक है, ताकि ज्यादा याद रहे दिमाग में. Okay, guys, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो. 883096, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी. हाँ बहुत कुछ है, पता है, इसलिए वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है. जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो. ओके जैन, जस्ट रिप्लाई कर देना. चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना. गाइस, आउट ऑफ 35 एटलीस्ट 25 शुड ज्वाइन ना, राइट? बी अ गुड पर्सन, राइट? बी अ गुड स्टूडेंट. जल्दी ज्वाइन करो. या जस्ट मैसेज द चैट बॉक्स, राइट? जो कर सकते हैं ठीक है, मैसेज द चैट बॉक्स. ओके, आई विल स्टार्ट, प्लीज ज्वाइन, राइट? और मैसेज द चैट बॉक्स, ठीक है, राइट? बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज, modulus of rigidity of ideal liquid. Think about it. सोचो एक बार, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या है? राइट? सो देखो, ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, राइट? सो थिंक अबाउट इट. आइडियल लिक्विड मतलब क्या है कि अगर पानी पानी, राइट, इस पे फोर्स लग रहा है, यहाँ वाले सरफेस फोर्स लग रहा है, राइट? ये पूरा फ्लो करते जाएगा ना, वापस आएगा कि नहीं आएगा? वापस रीगेन ही नहीं होगा. यस और नो? राइट? यस और नो? है ना? क्लियर? तो जीरो. चलो, the maximum load a wire can withstand without breaking when its length is reduced to half of its original length will be. ये तो हम लोगों ने कल भी देखा था कॉन्सेप्ट टेस्ट में, शायद ये कॉन्सेप्ट टेस्ट में हम लोगों ने कल भी देखा था. जल्दी जल्दी, आई गॉट 10 + 12 24 आंसर्स. ओके, करेक्ट, वेरी गुड, रिमेन सेम, वेरी गुड. सबको याद रहा ना? वेरी गुड. स्टिल इतने लोग गलत कर दिए हैं, कैसे? मैंने बताया था ना कल, राइट? यस और नो? दैट अगर तुम किसी वायर को हाफ काट भी दोगे तो इसका स्ट्रेस थोड़ी ना चेंज होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस थोड़ी ना चेंज होगा, बिकॉज इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. इट हैज नथिंग टू डू विथ एब्सोल्यूट लेंथ, राइट? यस और नो? नेक्स्ट, stress strain curve for four metals are shown in the figure, right?
Okay, I'm getting answers. Okay, Suhas. See, stress strain curve, right? Just remember the formula. Stress is equal to y into strain. So slope represents young modulus, right? So stress by strain. Correct, very good. So most of you are correct, है ना? Slope सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा slope किसका है? Tell me. सबसे ज़्यादा slope किसका है? सर इसका है. But सर बेवकूफ बनाया सर. यहाँ पे strain है और ये stress है. ये strain by stress, right? का दिया हुआ है सर. Yes or no? है ना? ग्राफ उल्टा है ना? Yes or no? Right? अगर यहाँ पे स्ट्रेस होता, यहाँ स्ट्रेन होता, तब डी होता. तो अगर उल्टा हो गया तो जो मैक्सिमम हम लोगों ने स्लोप देखा वो मिनिमम स्लोप हो जाएगा, बिकॉज इट इज उल्टा. यस और नो? गॉट इट? द ग्राफ इज उल्टा. ओके, राइट. नेक्स्ट. Wires suspended vertically from one end is stressed by attaching a force, right? Attaching a weight of 200 Newton to the lower end, right? है ना? And delta M is also, delta L is also given. Energy stored. Formula putting getting. Only 6, 7, 8 answers. Guys, formula putting getting है ये. Energy stored पूछा है. Energy per unit volume ने energy stored पूछा है. I hope all of you remember, right? Okay, correct, right? है ना? So most of you are correct. I hope all of you can solve this now. है ना? We know that energy per unit volume is equal to what? Half into stress into strain. ये सबसे इजी याद रखना, बाकी तुम कन्वर्ट कर लो कैसे भी, है ना? Yes or no? Right? Okay. Now we know that energy is what? Half into stress of formula क्या? Force per unit area into strain क्या हो गया? Delta L by L into volume. Volume क्या हो गया? Area into L. तो area कट गया यहाँ पे. L कट गया. So basically this is nothing but half into force into change in length. Yes or no? Yes or no? Tell me. Right? है ना? फोर्स गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, बस पुट करके सॉल्व कर देना है. इजी इनफ. ओके, चलो, वेरी गुड. जॉन, शशि, नाजनीन, सुप्तिका, रेणुका, समझ में आया सबको? सुप्तिका इज नॉट हियर. है ना? इजी इजी क्वेश्चंस, नहीं गलत होने चाहिए. आई एम नॉट वरीड कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, राइट? बहुत हाईफाई नहीं, बट बेसिक बेसिक ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, है ना? ओके, नेक्स्ट वन. ओके,
Okay, Manogna. Okay, Chinmay. Very good. Very good. Very good, Joel. Very good, Suhas. Correct, right? Most of you are correct. Very good, Ankit. Very good, right? है ना? तो देखो क्या दिया हुआ है. Always atmospheric pressure is given. When the same block is placed in vacuum chamber, the fractional change in its volume, right? Now, what is change in pressure? I hope all of you know. Change in pressure is this only. Yes or no? Right? Bulk modulus is given. Yes or no? Right? Yes. So what you have to find? Fractional change in volume means delta V by V. Can we calculate that? I hope all of us can calculate that. Just putting in getting. Yes or no? Right? Delta P is equal to bulk modulus delta V by V. So negative sign we will just ignore. This we have to calculate. So this by this, simple. This by this. Okay. So C is the correct answer. Next. Okay, very good, Neha. Very good. Suhas. Sampada is Joel. Renuka. Very good. Right? So yes, most of you are correct. Almost all of you are correct. Awesome. Easy था कि नहीं? Yes or no? Tell me. Easy लग रहा है कि नहीं? Easy लग रहा है कि नहीं? है ना? Basic form putting getting लग रहा है कि नहीं? तो पहले easy वाला हम लोग कर ले रहे हैं, है कि नहीं? Then module solve करेंगे, right? पहले ऐसा तो नहीं हमको फॉर्मूला पुट करना आता है, फिर हम लोग मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, फिर मॉड्यूल क्वेश्चन समझ में आएगा. मॉड्यूल क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल वन, राइट? ओके, दिस वन, टेल मी. Five answers. Others, guys, please answer.
Okay, time is about to over. Okay, 3 seconds. Just see. चलो, very good, right? Most of you are correct, है ना? देखो, a ball falling in lake of depth 200 meter, right? Shows this decrease in volume, right? What's the bulk modulus? Bulk modulus. So यहाँ पे क्या है ना, water है ना, water का हम लोग को density assume करना है, समझ में आया? Water का density assume करना पड़ेगा, right? Because water है ना, है कि नहीं? So bulk modulus क्या होता है directly? What is bulk modulus? I hope all of you remember, right? Pressure, tell me, sorry. Pressure is equal to bulk modulus delta V by V, right? ये दे दिया है. Pressure is what? Tell me, rho GV, right? Yes or no? है कि नहीं? Okay, by delta V by V is equal to beta. तो वॉल्यूम को 1, जब भी कुछ नहीं दिया ना, तो वॉल्यूम को यहाँ पे डेंसिटी भी नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, तो वॉल्यूम को 1 मान लो, राइट? ठीक है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज हाउ मच? 1000 ग्राम पर लीटर, राइट? सॉरी, 1000 kg per meter cube. Yes or no? राइट? और यहाँ पे एक्चुअली जब तुम करोगे, so pressure is equal to what? mg, force per unit area, right? और m क्या होता है? Mass is equal to density into volume, right? Yes or no? So density is equal to, sorry, density into area into length. Yes or no? Right? है ना? So if you substitute these values, right? है कि नहीं? If you substitute these values, देखो ये जो है, this is the change. This is the change of what? This is the change in, tell me, volume of the ball. Confuse मत होना. ये जो है वो क्या है? Change in volume of the ball. और यहाँ पे जो V था, यहाँ पे जो V आएगा, that is what? That is volume of the water, which is, tell me, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट, रो जी एच हो जाएगा ना, रो जी एच, राइट? रो जी एच हो जाएगा ना, प्रेशर वॉल्यूम में ही आएगा ना, बिकॉज ए कट गया, राइट? सो इट इज रो जी एच. यस और नो? माय बैड, इट वाज रो जी एच, राइट? है ना? सो डेंसिटी हमको पता है ये होगा, जी पता है, एच दिया हुआ है, राइट? और डेल्टा वी बाई वी दिया हुआ है ना? ओके, गॉट इट? एवरीवन गॉट दिस? ओके, नेक्स्ट. बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं पॉइजन रेशियो के, राइट? मैंने जो बोला दैट इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? उसी से बाकी सब डिराइव होते हैं, है ना?
मैंने जो बोला दैट इज वेरी बेसिक डेफिनेशन, जो सबसे बेसिक है, राइट? चेंज इन रेडियस बाय चेंज इन लेंथ, है ना? दैट इज वेरी बेसिक डेफिनेशन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो पूछा क्या है? यंग मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स दैट ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट? तो अब बताइए 0.2 कैसे आया? हाउ? टेल मी. एनीवन? 7 प्लस इतने लोगों ने आंसर दिया है. हाउ? बताओ. बिकॉज वी नो दैट, अभी हम लोगों ने देखा पॉइजन्स रेशियो, राइट? पॉइजन्स रेशियो इज व्हाट? चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट? ये देखा हमने, यस और नो? तो ये कहां से आया? ये कहां से आया? बिकॉज हमने तो रिलेशनशिप पढ़ाया ही नहीं है. हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है. नहीं नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने एक्चुअली नहीं पढ़ा ये चीज, है ना? हमने वाई, टेल मी, हमने वाई, बी और ईटा के बीच रिलेशनशिप पढ़ा ही नहीं है. पढ़ा है क्या? नहीं ना. ओके, सो ध्यान दो, राइट? सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, राइट? नोट करके लिखो, नोट करके लिखो. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट young modulus and this, ठीक है? think about it everyone, think about it, right? think about it. So don't you think, what is, when you talk about y, what is y? Longitudinal stress by longitudinal strain, yes or no? Okay, and eta is, tell me, shear stress by shear strain, right? So obviously there's a whole derivation, which I'm not trying to do that now, because you just have to remember one basic relationship between y and this eta, है ना? Right? That relation says that y is equal to 2 eta into 1 plus p, where p is a Poisson's ratio. P is your Poisson's ratio. समझ में आया? Right? Got it? So this is the relationship that you need to remember, right? We can derive it, no issues, right? I will derive it, but अभी के लिए ये लिख लो, ठीक है? Got it? अब बताओ, तो जिसने इसने 0.2 लिखा वो या तो तुक्का मारा, नहीं तो कहीं से छाप लिया. यस और नो? बिकॉज ये पता ही नहीं तुम लोगों को, ये नहीं आना चाहिए था. यस और नो? राइट? ये लिखो, ये पूरा लिखो अभी, राइट? यंग मॉडल इज इक्वल टू 2 into मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ब्रैकेट 1 plus Poisson's ratio, right? So this is a relationship between young models and models of rigidity. Okay, now if you put the value, रेशियो, अगेन ध्रुव मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? राइट? ठीक है, नोट कर लिया ना? ओके, बिकॉज ये मैं बताऊंगा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडल्स आल्सो, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? तीनों के बीच में रिलेशनशिप होता है ना? सो दैट we will study at the last. No worries, right? चलो next.
step by step, easy enough. Okay, right. Only 10-11 students gave the answer. Guys, ये अभी देखा ना हम लोगों ने, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया. यस और नो, टेल मी, रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है कि नहीं है? राइट, है ना? ओके, ये भी रिपीटेड टाइप्स हो गया है ऑलमोस्ट, लाइक सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया है. सबको आंसर करना चाहिए इसका. ओके, राइट. इतने लोग गलत हो गए कैसे, देखते हैं. The load versus elongation, right? So F versus delta L हो गया ना, yes or no, tell me. हाँ या ना, right? Okay. The thickest wire is represented by the line. Thickest wire means area सबसे ज्यादा होना चाहिए. Yes or no, right? और यहाँ बोल दिया कि सेम मटेरियल है, मतलब y सबका सेम है ना भाई. तो force per unit area is equal to what? Delta L by L, है ना, into y, right? So force is equal to what? Y by L into delta L, right? Into area. Yes or no? अब ये तो कांस्टेंट हो गया है भाई, right? Yes or no? This is constant, right? So tell me आंसर क्या होगा? जिसका सबसे ज्यादा ये होगा, है ना, right? स्लोप होगा. एग्जैक्टली, स्लोप सबसे किसका हो गया? ओडी का. गॉट इट एवरीवन, गॉट दिस? यस और नो, गॉट दिस कॉन्सेप्ट? सबको समझ में आया? राइट, रट्टा वाला टाइप नहीं है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है. चलो लेट अस सी. वेरी गुड मोहित, वेरी गुड. ओके यश, यस, राइट. ओके स्निग्ध ध्रुव, चलो नेक्स्ट. सो अब आते हैं मॉड्यूल पे, है ना. सो अभी बेसिक बेसिक हो गया हमारा, बेसिक बेसिक हो गया ना. यस और नो, एनीवन हैव एनी डाउट इन बेसिक्स? एनीवन हैव एनी डाउट इन बेसिक्स? okay, right. Now guys, first of all you have to trust me, okay, because there are lots and other things that you will be seeing in different books, okay, right? The concept would be totally same, there will not be any difference in the concept, the only difference will be problems, okay, right? Now why I'm not like solving or giving you difficult problems, because there's no point, you don't remember first, second you get intimidated by the chapter. जैसे देखो ये चैप्टर से इंटिमिडेट हुए क्या? बिल्कुल भी. टेल मी, अनन्या, भावना, डर लगा क्या इस चैप्टर से?
तुम लोग साइकोलॉजिकली डर बना लेते हो, है ना, जब हम लोग मॉडल सॉल्व करते हो। इसलिए हम लोगों ने पहले बेसिक बेसिक किया, राइट, कि हाँ फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, हाथ चल रहा है, राइट। बट अब इसके बाद भी अगर कोई हाथ नहीं चलाएगा ना, देन इट इज पेन, राइट। देन ऑनेस्टली कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज आई ट्राई टू चेंज द वे, राइट। बेसिक बेसिक पढ़ाओ, ज्यादा हाई फाई मत पढ़ाओ, कंफ्यूजिंग चीज पढ़ाओ ही नहीं, जो झूठ मूठ का प्रॉब्लम क्रिएट करे, राइट। पहले बेसिक पढ़ा लो, बेसिक समझ में आएगा, फिर जिसको एडिशनल कॉन्सेप्ट समझना है वो समझ लिया, जिसको नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट डर तो नहीं लगेगा ना, है कि नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे when we solve previous year JEE and previous year NEET questions, so you will realize इतने से ही क्वेश्चन में बन जाता है, इतने से ही, अगर इतना भी याद रहे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नाउ if you remember, we have covered all the things, right? What is plastic, what is plasticity, right? These are some theory that we have to know, right? External force, internal force, है ना? Okay, then restoring force, tensile, right? Stress, compressive stress, and all those things we have covered. Stress strain, Hooke's law, right? Yes or no? Now, as I said, that there are few things that we will be covering in subsequent chapters. Why? Because when you talk about change in length, right? Change in length can happen because of multiple reasons. For example, there's change in temperature, right? Yes or no? है ना? So change in temperature, because of change in temperature, there's change in length. That is given by, tell me, original length into alpha delta t, right? Or delta theta, है ना? So whenever there's a change in length due to temperature, we just have to use this. Okay, right? No, this alpha. This is called as, right? This is called as coefficient of linear expansion. Okay, got it, right? So because of this, because since this will be because of heat, right? It is called as thermal strain, है ना? Thermal change in length, right? Thermal strain, and stress will be thermal stress. सब ये notes भी ये सब मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब तो मॉड्यूल में ही है. This is in module. Everything is module, right? Yes or no? Everything is in module. Okay, right? Yes or no? So we have done these things. Okay. Now, as I said, the relationship between bulk modulus of elasticity, bulk modulus, Young modulus, and modulus of rigidity. The derivation is actually very big, and lots of math is involved, especially geometry. Okay, so that's why I'm going to skip that. But you just remember the basic formula, basic relationship. Okay, right? Okay. Now let us see the first topic. The first topic was basic longitudinal stress and strain, है ना? So did we cover this concept? Do we have idea about these concepts? We should ask, do we know what is elastic body, what is rigid body, what is plastic body? Yes, we know, right? है ना? Elasticity and molecular, wait, just let me put up my charger. Okay, right. Then yes, stress and rest, right? So I know these things, sir. I know, right? So let us see. Let us see the type of problem that is being asked. So I guess all of us can solve pre-reading. Yes or no? By now, all of us can solve pre-reading. Yes or no? Can we solve pre-reading? Pre-reading तो हो जाएगा सर. Pre-reading हो जाएगा, है ना? Right? So मैं homework दे रहा हूँ. प्री-रीडिंग के सवाल करने के लिए पूरा 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, 7 क्वेश्चंस है ना, 7 क्वेश्चन फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग टाइप्स हो जाएगा. प्री-रीडिंग आई गेस प्री-रीडिंग इज समथिंग दैट यू कैन सॉल्व इजीली, है ना. ओके, नाउ अब आते हैं इन क्लास एक्सरसाइज पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है ना. व्हाट इज गिवन, एवरीवन यू ओनली आंसर मी. इंग्लिश आता है सर. अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, लेंथ इज गिवन सर, राइट, सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, दिख रहा है सर, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग लाइक दिस. Okay, length is given. When the mass is hanged from the lower end, right? Okay, the length increased by 2 centimeter. Delta L is 2 centimeter given. Find the longitudinal strain. बन जाएगा ये, easy है कि नहीं? Tell me. Yes or no? What is the formula of strain? बन जाएगा. Strain, longitudinal strain का formula क्या हो गया?
Prashasti, tell me Prashasti, what's the formula of longitudinal strain? करेक्ट संपदा डेल्टा एल बाई एल. अब तो अब ये इसमें करना क्या है, कुछ करना है क्या? राइट है कि नहीं? इजी इनफ. ओके चलो राइट. नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्या दिया है, जो वायर है राइट, वायर, ये वायर दिया है ना, ठीक है. सो वायर जनरली मासलेस होता है ना. ओके नाउ द सेकंड वन, a solid cylinder of steel column is this centimeter long, length is given, and this, sorry, this meter, and this centimeter in diameter, so radius is given 4.5 centimeter, right? So area we can find pi r square. What would be the decrease in length when carrying a load of this kg, right? So obviously it's a column, right? It is a column, right? It is a column. So there's a compressive stress, yes or no? There'll be a compressive stress, yes or no? Like pillar, right? Pillar of your bridges, right? Okay. So force is also given. Force is also given. F is also given because F is equal to what? Mg. Now tell me, can I calculate delta L? Formula putting getting, yes or no? Question number 2 बन जाएगा. Everyone, formula putting getting है. John, Athar, right? Sir. है ना? John, respond. John, you don't respond, right? Vivek बन जाएगा. Okay, very good John. अभिलाष, मनोगना, मोहित, है ना? Easy लग रहा है कि नहीं? Easy लग रहा है ना? Okay, third one देखो. Right, radius is given. Radius is given 4 mm, है ना? Right? Very good Ankit. Right, radius is 4 mm. 4 mm. Convert karna. Conversion of unit is required. You have to convert this into meter. Now, force is required to stretch the wire by 20% of its length. So delta L by L nikal jayega. It is given as 20%, which is 20 by 100, right? Which is 0.2. Okay, right? Area is given. Y is given. Can you find F? F by A is equal to Y delta L by L. F निकल जाएगा ना, yes or no? ये मॉडल्स फॉर्मूला. देखो एक ही फॉर्मूला है जो घुमा फिरा के पूछ रहा है. ओके राइट, yes or no? You have to complete these. You have to complete these. अपने से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आई गेस बहुत इजी था, तुम लोग अपने से कर सकते थे और कर लोगे. नाउ फोर्थ वन, wait, fourth one, Omkar, can you explain me fourth one? You don't have to solve, just have to explain, right? Question बोल क्या रहा है, which formula to use. Okay, right? And guys, try to speak up now. Try to speak up. Yeah, peer learning is best learning, and you guys don't even do that, right? सीखना है कि नहीं सीखना है? ओमकार, ओमकार, हाँ फोर्थ वन. सर पढ़ना है. हाँ पढ़ के बताओ कि क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बस. वायर ऑफ लेंथ गिवन है, आर ओके. वेट डब्ल्यू. वेट मतलब फोर्स गिवन है, राइट? वाई भी गिवन है ना? ओके, सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ओमकार? the increase in length of wire. Delta L. Which formula we will use? That formula use है ना, ये सिर्फ formula एक ये, yes or no? Right? So what would be the formula? Tell me. बोलो ओमकार, what would be the formula of delta L? Omkar, you can message the chat box. Everyone message the chat box. Prashasti is here. Prashasti is not here. Prashasti left. Prabhalika is also not here. Very good Jaita. Only Jaita remember. बाकी सब खा पका गए हैं. ठीक है, बाकी सब खा गए हैं. अभी आज क्लास में मैंने बोला था, आज का क्लास में मैंने हिंट दिया था इसको. Except for Jaita, everyone forgot. Everyone forgot.
Very good, very good, very good, Dhruv. Dhruv also remember. Correct. इसलिए बोलते हैं ना, right? It is not about how hi-fi concept you study. It's all about how basic concept you study, right? Guys, कितने लोग very good स्निग्ध दो guys, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना. It is massless wire with mass. Tell me, it is a massless wire with mass. Think about it. With mass, right? तो याद है जब हम लोगों ने विथ मास वाला किया था तो इंटीग्रेशन किया था, यस और नो. सेम ये कॉन्सेप्ट हो गया, यही डायग्राम हो गया ना, यस और नो. और इंटीग्रेशन का हाफ आ गया था मेरा, राइट? एफ एल बाई ए वाई जो था वहां पे हाफ आ गया था, यस और नो, यस और नो, टेल मी. Right? Any issues in this? Any issues in this? सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आया? ड्राइव किया हुआ हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ ये ऑलरेडी, राइट? चलो, ओके. नाउ फिफ्थ वन, एवरीवन, फिफ्थ वन ध्यान दो, राइट? यही है ना फिफ्थ वन. अ लाइट ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर. देखो फोर्थ तक मुझे दिक्कत नहीं है, फोर्थ तक हम लोगों ने कर लिया. फिफ्थ वन, a light rod of length 20 centimeter, length is given, is suspended from the ceiling horizontally. Okay, तो डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम नहीं है भाई, इसका डायग्राम बनाना है, right? A light rod of 20 centimeter suspended from the ceiling by the means of two vertical wires. So it is like this. ध्यान दो सबको. English, right? है ना, right? Yes or no? Okay. Now, one of the wire is made up of steel. This is made up of steel, right? And cross section area is A1 मान लो, and the other is brass, and cross section area is A2 मान लो. Along the rod, what is the distance, right? At what distance a weight should be hanged? So at what distance a weight should be hanged, right? है ना? To produce, right? अब यहाँ पे एक weight रख दिया गया, मतलब mg नीचे की ओर. अब ये distance पूछा, what is this distance? What is this distance? अब देखो ये सवाल अब अच्छा हो गया है. अब कैसे अच्छा हो गया है सर? अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया सर? ये टॉर्क और फोर्स दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है. समझ में आया? यस और नो? हाँ या ना? टेल मी यस और नो. सबको ध्यान दो, सबको ध्यान दो, ये सवाल अच्छा हो गया है, सबको फोकस यहाँ करेगा, राइट? ओके, नाउ think about it, everyone, think about it. First of all, what is your, right, what is your formula? पहली बात तुम्हारे पास है क्या क्या? Let us try to see what do we have. फॉर्मूला मेरे पास क्या क्या है ना? That's what we will see कि हमारे पास है क्या क्या, राइट? हमें जब पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या है तो how can we solve? So sir, I know that we have two rods, है ना, right? So if I'm talking about force equal करना, है ना, if I'm talking about equal force, first one वाला, है ना, equal stress, which means equal force, है ना? Yes or no? Think about it. I'll just put it over here. ठीक है? I'll put it over here. Right. Okay. So let us make a diagram again. Just give me a minute. I'll make a diagram again. So this is rod. स्टेप बाय स्टेप, है ना? समझो, पहले सब कुछ समझो.
Okay, it is like this, yes or no? I hope all of you understood this. Wait, Omkar. Right? है ना? ध्यान दो. और पूछा गया है at what distance, right? At what distance? है ना? At what distance a weight should be kept? A weight should be tied, right? So this is weight, mass m. Right. Now think about it. Think about it. What all we have? पहले सोचो एक बार. पहले सोचते हैं. Sir, if you talk about this, it's a problem of NLM. It is a problem of NLM, right? And it at the same time, it's a problem of rotation also, right? Okay. कैसे? Sir, आप कैसे बोल रहे हो रोटेशन का प्रॉब्लम ये हुआ है? खुद सोचो ना, खुद सोचो. अगर मान लो कि ये अनबैलेंस्ड रहेगा और ये इधर फोर्स ज्यादा लग गया तो ये इधर टिल्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. यस और नो? देखा है कभी? अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? ये इधर टिल्ट करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, राइट? ये क्या हो जाएगा? ये स्लैक हो जाएगा, है ना? राइट? बट अगर बैलेंस रहेगा तो क्या होगा? ये एक टेंशन लगा, एक टेंशन लगा. दिस इज T1, दिस इज T2. यस और नो? राइट? ये दोनों इसको बैलेंस कर रहा है. यस और नो? और इसका मास इसको बैलेंस कर रहा है. इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, बीच में होगा ना. इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा कहीं पे, राइट? Yes or no? Tell me, yes or no? So first of all, if you write force equation, पहले मैंने क्या किया? मैंने FBD बना दिया. तो FBD सबको समझ में आया? FBD सबको समझ में आया? हाँ या ना? FBD सबको समझ में आया? yes or no? Right? है ना? Right? Very good, John. है ना? Because see, sir, according to this problem, right? Okay, rod of length, this is given, है ना? Right? And one of the wires made of steel, right? Okay, right. Okay. Mass of rod is not given, right? Mass of rod is not given ना, तो rod फिर massless मान लेंगे if it is not given, right? Okay, right? तो ये mg लेने की जरूरत नहीं है. बट अगर सवाल पूछा आता है ना तो ये इसका मास दे देता है. सो अभी क्योंकि इसका मास नहीं दिया तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट? बट देयर विल बी सम अदर क्वेश्चन जहाँ पे ये मास दे देगा, राइट? ठीक है, समझ में आया? तो अगर मान लो ये मास देता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, नहीं देता तो नहीं कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? T1 प्लस T2 ऊपर की ओर है, यस और नो? T1 प्लस T2 ऊपर की ओर है, यस और नो? सर यस. सर हम ना वो व्हाट वी कैन से यस द स्टिक as shown in the figure sir we हाँ? can take a mass at the center and we can take distance x and as 2x 2 minus x right बट sir वही बात है ना, वो अज्यूम कर ले रहे हो कि T1 T2 इक्वल है, यस और नो? हाँ सर राइट? बट वो इक्वल रहेगा क्या? नहीं सर बिकॉज दोनों सेम वायर नहीं है ना, राइट? हाँ सर अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था? सेम वायर है तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेट करके बीच में आ जाएगा. बट यू कैन नॉट से, है ना? ओके, यस सर बिकॉज masses आर डिफरेंट, राइट? ठीक है. और मैं इंजन बता रहा यूजुअली ये सवाल काफी इजी है. ये सवाल काफी इजी है. पहला वाला प्रॉब्लम जो है ना, इसमें बहुत इजी है. इसमें तुम मुझसे क्या करना है? स्ट्रेस इक्वल है, विच मीन्स टेंशन 1 बाई एरिया 1 इज इक्वल टू टेंशन 2 बाई एरिया 2. बस ये करना है और कुछ नहीं करना है. समझ में आया? गॉट इट? राइट? और यहाँ पे फोर्स इक्वेशन क्या है? T1 plus T2 is equal to this mg. yes or no? और W क्लियर हो गया? बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द वायर्स. सो फर्स्ट वायर के लिए स्ट्रेस क्या हो गया? टेंशन बाई एरिया, T1 बाई A1. yes or no? yes or no? और इसके लिए क्या हो गया? T2 बाई A2, इसके कारण टेंशन बाई A2, right? Okay, so here if you see the area, see एक का एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है. So I can say that sir A2 is 2A1, yes or no? Right? So can I say sir T2 is equal to what? 2T1. हाँ या ना? Yes or no?
Tell me. Clear? This is clear. T2 is equal to 2T1. If I put it over here, tell me, if I put it over here, can I calculate? Sir, 3, tell me, 3T1 is equal to W. And now, so T1 is equal to what? W by 3. Yes or no? Right? And T2 is equal to 2W by 3. But sir, how can we calculate this X? अब ये X कैसे पता चलेगा? Tell me, X कैसे पता चलेगा? सर टॉर्क्यू को नेट पे लेके और इक्विलिब्रियम पे ले लेंगे. Correct, right? That is what we will do, है ना? Because अभी मैंने बोला ना कि इसके कारण और इसके कारण टॉर्क इक्वल होना चाहिए. Yes or no? तो if you saw talk about this, T1 का टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे होगा और इसका टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे होगा, right? So दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है. So if this is x, so what is this distance? What should be this distance? L minus x. Yes or no? Right? So if you take this point as axis of rotation, what is torque due to T1? It will be T1 into x, and this should be equal to what is torque due to T2? Tell me. It should be T2 into L minus x. Right? Now, can I solve for x? Because I know everything, right? T1 is W by 3 into x is equal to T2 is 2W by 3, this is W, right, into L minus x. So ये कट गया, ये 2 हो गया, इधर चला गया, तो x is equal to what? L by 3. Got it? Yes or no? हाँ या ना? Any issues in that? Tell me, yes or no? सबको समझ में आया? Step by step. So देखो, if you observe, right, यहाँ पे जो concept use हुआ है ना, यहाँ पे जो concept use हुआ है, okay, वो किसका concept हुआ है? Tell me. एनएलएम का और रोटेशन का, बेसिक वाला, बहुत हाईफाई नहीं, बेसिक वाला. यस और नो? बहुत बेसिक वाला है ना? बहुत हाईफाई यूज हुआ है क्या कि बहुत बेसिक वाला यूज हुआ है? टेल मी. है ना? बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो तो बहुत बेसिक है, वो तो सिर्फ ये है, T1 by 1 is equal to T2 by A2, है ना? राइट? नो, ओके. नाउ सेकंड वन देखो, सेकंड पार्ट, इक्वल स्ट्रेन. अगर इक्वल स्ट्रेन हो गया, दिस इज पार्ट 1, फर्स्ट वन. सेकंड पार्ट, इक्वल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? एवरीवन टेल मी, व्हाट इज equal strain means? Tell me. Delta L1 by L is equal to delta L2 by L, because length तो दोनों का सेम हो गया ना? Yes or no? Right? Yes. Now in this case what we need to do? Tell me, in this case what we need to do? Because I actually require tension only, right? I actually require tension. I need this is same, this is going to be same. ये चीज नहीं होगा. ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप है ना, ये सेम रहेगा. यस और नो? राइट? हमें बस टेंशन का रिलेशनशिप निकल गया, फिर ये तो सेम रहेगा. यस, गॉट इट. सो कैन आई कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ टेंशन? yes, I can, right? We know that this can be written as what? This is strain now. Strain is stress, right? T1 by A1 by young modulus y1 is equal to T2 by A2 by y2. Yes or no? Right? तो ये मेरा additional आ गया. Got this? Tell me, got this everyone? Yes or no? सबको समझ में आ रहा है? Right? So अब यहाँ पे T2 क्या हो गया? T2 is equal to, tell me, T1 by A1 y1, okay, into, tell me, A2 y2. So if you see this, we know that A2 is 2A1. But what about y2? Sir, y2 is half. Tell me, brass का 10 है, right? है ना? Steel का this है. So y2 is half of y1. है ना? Same ही चीज है ना? Same ही चीज तो है. Same ही चीज है.
मैंने किया ना. So actually में A1Y1 is equal to A2Y2 आ गया. Yes or no? ये इक्वल हो गया ना, बिकॉज सर एरिया इसका डबल है और यंग मॉड्यूलस इसका डबल है, राइट? यस और नो? सो क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू T1 हो गया. अब बताओ अगर T2 T1 इक्वल हो गया, जैसे अब किसी ने बोला अगर ये दोनों टेंशन इक्वल हो गया तो x क्या हो जाएगा? टेल मी, कॉमन सेंस बताओ. अगर दोनों टेंशन इक्वल हो तो x क्या हो जाएगा? L/2 बीच में आ जाएगा ना. यस और नो? गॉट दिस? एवरीवन गॉट दिस? रेज योर हैंड. यस और नो? रेज योर हैंड. सबको समझ में आया? बिकॉज फिर सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, राइट? फिर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W. सो T इज इक्वल टू W/2, है ना? सो ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, राइट? है ना? सो 2x इज इक्वल टू L इज इक्वल टू x/2. ठीक है? T1 इंटू x इज इक्वल टू T2 इंटू L माइनस x. सेम स्टेप बाय स्टेप. W/2 इज इक्वल x इज इक्वल टू W/2 इंटू L माइनस x. कट गया, राइट? x इधर गया. 2x इज इक्वल टू L, सॉरी 2x इज इक्वल टू L, L इज इक्वल टू x इक्वल टू L/2. बताओ सबको समझ में आ गया ये सवाल? सबको समझ में आया? यस और नो? प्रशस्ति तो है नहीं, प्रवलिका भी नहीं है, ओके, रेणुका, सुक्तिका भी नहीं है. ओके चलो नेक्स्ट. आई गेस दिस इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट, है ना? सो फिफ्थ वन सबको क्लियर हो गया? ओके, सिक्स्थ वन. और ओके, सिक्स्थ से बेटर है, ठीक है, बिकॉज सिक्स सेवेंथ कर लोगे तुम, सिक्स सेवेंथ कर लोगे, है ना? सिक्स सेवेंथ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, ठीक है? लेट अस सॉल्व एट वन. एट वन इज गुड प्रॉब्लम. एट वन देखते हैं. एज आई टोल्ड यू, राइट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ दूसरे चैप्टर्स के ही तुमको दिक्कत देंगे. वही बहुत बेसिक बेसिक वाले हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई है, बहुत बेसिक बेसिक, बहुत बेसिक बेसिक, है ना? बहुत बेसिक, मतलब इतना तो आना ही चाहिए, राइट? इतना तो इसमें भी बहुत बेसिक. अब देखो यहाँ पे देखो, मैं समझा रहा हूँ. राइट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल एफबीडी बनाने सबको आता होगा. रेशमा, एफबीडी आता है? रेशमा, रेशमा इज नॉट हियर आई गेस. रेशमा इज ऑल्सो नॉट हियर. प्रशस्ति ज्वाइन बैक. ओके, सो सी, एफबीडी सबको आता है? यस और नो? एफबीडी सबको आता है? स्टार्ट विद एफबीडी, है ना? बिकॉज फोर्स चाहिए ना, राइट? फोर्स तो चाहिए चाहिए. सो mg नीचे की ओर ना. यहाँ पे ये टेंशन है T1, राइट? और यहाँ पे क्या है? T2 इधर है और ये T2 है. यस और नो? हाँ या ना? बिकॉज वायर चेंज, टेंशन चेंज. यस और नो? यस और नो? ये एफबीडी सबको समझ में आया? anyone have any doubt in this FBD? Anyone have any doubt in this FBD? No? चलो अब सवाल पढ़ते हैं. Each of the three block having mass 333. Sir, M1 is equal to M2 is equal to M3 is equal to 3 kg. Right, sir. समझ में आया sir? Each wire A and B है cross section here, this and this. Sir, A1 is equal to A2 is equal to 0.005 into 10 power minus 4 meter square, right? And y1 is equal to y2 is equal to 10 power 11 Newton per meter square. Okay, neglect friction. Friction ignore करना है. Find the longitudinal strain developed in each wire. Longitudinal strain. So we know that, sir, delta L by L is equal to, tell me, stress, which is force per unit area, right, into y. Yes or no? Right? Yes or no? So first of all, when you talk about first wire, so for first wire, delta L1 by L1 is equal to what? F1 by A into Y, because A into Y is the same. What is F1? F1 is actually T1. T1 by AY. Yes or no? Right? तो हमको T1 निकल जाएगा, बन जाएगा. और B क्या होगा? Delta L2 by L2, which is what? Actually T2 by
ay, yes or no? तो मुझे बेसिकली T1 T2 चाहिए ना यार, मुझे बस T1 T2 चाहिए. गॉट इट, राइट? ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यहां से इस चैप्टर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. गॉट इट? यस और नो? Okay. Now, how to find T1, T2? Tell me. How to find T1, T2? अभी अभी मैंने बताया कैसे. Tell me. How to find T1, T2? Force equation. Very good, right? So if you talk about this, है ना, इस पे force equation लिखूंगा मैं, है ना, इस पे force equation लिखूंगा, right? तो क्या हो जाएगा? Tell me, everyone, step by step. What will happen? So mg minus T1 is equal to ma because mass सबका same है, right? है ना? और अब बताओ, तुम्हें लगता है कि सर ये और ये दोनों एक ऑब्जेक्ट की तरह हम मान सकते हैं? दोनों एक ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना, राइट? बिकॉज कंस्ट्रेंट मोशन में है कि नहीं? कंस्ट्रेंट मोशन में है. यस, राइट? ओके. So if I consider these two as equal, as a one mass, right? So T1 will be equal to what? 2 ma, because acceleration would be same, na? Acceleration would be same, right? Yes or no? So can I find acceleration? Can I find a? T1 अगेन, T1 T net कैसे होगा विवेक? T1 T net कैसे होगा? सोचो ना, T1 का वैल्यू ये हो गया तो T1 पुट कर देंगे यहाँ पे, लेकिन डायरेक्टली पुट कर देंगे. क्या हो गया? mg is equal to what? ma plus 2ma, right? So mg is equal to 3ma. तो a कितना हो गया? a is equal to what? g by 3. yes or no? a is equal to g by 3. got it? तो T1 निकल गया ना, T1 निकल गया. नाउ अब बताओ, ये p को मूव कर कौन करवा रहा है? T2 मूव करवा रहा है. तो 4p T2 is just equal to ma, है ना? T2 is just equal to ma, right? So if T2 is equal to ma, I can get T2 is m into g by 3. तो T2 निकल गया, T1 निकल गया. got it? yes or no? yes or no? tell me. right? Okay, right. So can you solve for this? Can you solve for this now? T1 T2. okay, right. अब पुट करके निकाल लोगे ना, पुट करके निकाल लोगे, सॉल्व तो लेना है ना? ओके. सो राइट, सो वी आर डन विद दिस, है ना? हमारा ये हो गया. सो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज, राइट, होमवर्क में मैं क्या दे रहा हूँ? 7 तक इन क्लास, 7 तक प्री रीडिंग, देन इन क्लास एक्सरसाइज पूरा 8 तक, 8 तक, है ना? 8 तक. ओके, राइट? लेवल 3 नहीं, लेवल 3 छोड़ देना, लेवल 3 छोड़ देना, ठीक है? लेवल 3 यू कैन लीव. okay, right? Then homework में you can do till question number, actually you can do till question number 6 तक कंपलसरी है. 6 के बाद बन जाए तो बेटर, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, बट 6 तक तो कंपलसरी है, बिकॉज अभी 6 जैसा क्वेश्चन किया हमने, है ना? एक्चुअली 7 भी हो जाएगा, 7 ऑल्सो यू कैन डू, राइट? सो my next class will be Tuesday, okay, right? And Tuesday will be both of my classes. Tuesday I'll be completing this chapter. Tuesday दोनों chapter, sorry, ये दोनों क्लास मेरे होंगे Tuesday को most probably, ठीक है? लाइक मोस्ट probably क्या, दोनों मेरे ही होंगे, है ना? इस चैप्टर खत्म करेंगे तो मैं असाइनमेंट भी दूंगा, तो ये डिस्कस होगा. टेस्ट तो ऑफलाइन है, टेस्ट सॉरी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन कभी भी दे देगा, ठीक है संपदा? राइट? ओके, सो वी विल कंप्लीट दिस होल थिंग इन ट्यूसडेज क्लास, ठीक है? okay, got it? right?
हाँ ट्यूसडे ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो जो बचा उचा है ट्यूसडे हो जाएगा, फिर एक और क्लास नेक्स्ट वीक में खत्म ही हो जाएगा पूरा ये। ओके चलो, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। टेल मी, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो? बेसिक समझ में आया? ट्राई होगा सबसे एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, है ना, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस होंगे। चलो ओके, ओके देन बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन। A gravitation test is there, right? शेड्यूल में मैंने डाला हुआ है ना, ग्रेविटेशन का एक और टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू सी दैट, राइट? इट इज ऑलरेडी देयर इन द शेड्यूल, है ना, जो मैंने भेजा था वीक वाला। सो फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड वी विल गिव यू द शेड्यूल ऑफ टेस्ट एक हफ्ते पहले ही, ठीक है, राइट? ओके चलो बाय एवरीवन।